Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English School. Okay, so in last lecture, I started multiplication chapter, and the topics that we have covered is multiplication of tens, multiplication of a two-digit number by a one-digit number, the lattice method, then multiplying two-digit numbers, the lattice method. Okay, now let's start the next topic, multiplication vertical arrangement. Type. We have learned to multiply using the lattice method. Let us learn another way to do the same. Okay, means since now we have seen how to multiply two numbers using lattice method, but now we will see the another method. Okay, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे. We have understood the operation. Okay, अब हम लोग को समझ में आ गया कि ऑपरेशन मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली क्या है. ओके, we shall only write it in a different way. Means हम लोग को जस्ट उसको एक डिफरेंट वे में सॉल्व करना है. Now look here, multiply 34 and 2. Means हम लोग को 34 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. So now look here how we will multiply. You can see 34 is a two-digit number. So we will write tens and then unit, right? Unit, here it's unit place. Okay, unit place पे आप क्या करोगे, unit digit लिखोगे, that is 4, and tens place पे आप tens digit लिखोगे, that is 3. Okay, so now look here, 3 4 34 multiply by 2. Okay, now let's multiply. फर्स्ट आप क्या करोगे, पहले जो 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले यूनिट डिजिट से, उसके बाद फिर टेंस डिजिट से. ओके, सो नाउ 4 2s are 8, then 3 2s are 6, right? So look, first multiply the 4 in the units place by 2. 2 4s are 8, hence write 8 under the line in the unit place. Now multiply the 3 in the tens place by 2. 2 3s are 6. Write this 6 under the line in the tens place. The product is 68. What is the product? That is 68. The product. Product means what? When you will get a number after multiplying two numbers. Okay, so that result is called as product. Okay, so your product is 68. So now you can see this is the quick method, right? So good. Tony says good. This is a quick method. Means lattice method में हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, split ends, right? Split किए हम लोग ने. After that फिर जो numbers आए multiplication के बाद उसको add किए, right? But now here it can be done in a very simple way. So now let's do another examples. First one, 4 to 42 multiply by 2. So now we will use the same method. अब क्या करोगे आप, पहले 2 से 2 को multiply करोगे. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So the product is 84. Now let's do the next one. First one was already done. We will try the next one. Now 4 2, right? पहले आप क्या करोगे, 4 को 2 से multiply करोगे. So 4 2s are 8. So 4 2s are 8. Then 2 2s are 4. So here your product is 48. Okay. Then next. 2 to 22. Right. So now look here. You have to multiply it by 4. So first you will multiply 2 and then 4. 2 4s are 8. Then 2 4s are 8. So your final answer is 88. Right. Then now look, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So your product is 93. Okay. Now multiplication by carrying over. Next topic is multiplication by carrying over. It's आपको carry करना पड़ेगा numbers को. Now look, Tony says how to multiply 26 by 3. So Salma says let's arrange the multiplication vertically. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, vertically arrange करना पड़ेगा. So now vertical arrangement अभी हम लोग ने पढ़े कैसा रहेगा method. Unit place पे आप क्या करोगे, unit digit लिखोगे. Tens place पे 10 digit. So here number is 2 6 26, and then after you will multiply it by 3. So
Let's arrange the multiplication vertically. First multiply the 6. First multiply the 6 in the unit place by 3. मीन्स पहले आप क्या करोगे, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट. सो 6 3s are 18. Now look, 6 3s are 18. But you know 18 is a 2-digit number. You cannot write directly 18. So you will write the unit digit. So 8 you will write here, right. देखो, look here. आप 8 क्या करोगे, राइट करोगे, और ये जो 1 है आप वो क्या कर दोगे, टेंस प्लेस पे कैरी कर दोगे. सो नाउ नेक्स्ट 3 2s are 6, राइट. 3 2s are क्या होता है, 6 होता है. एंड देन ये जो कैरी डिजिट है ना, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो 6 + 1 7. So your final answer is 7 8 78. Means your product has become now 78. Now let's see the next example. 18 4. ओके, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. तो अभी इसको भी देखते हैं हम लोग कैसे किया हुआ है. उसके बाद हम लोग ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 18 4 फॉर 8 यूनिट्स बाय 4. पहले आप क्या करोगे, 8 यूनिट्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे. सो 8 4s are 32. 8 4s are 32. So now look here, you cannot write 32 as a whole number here. You will write 2 and 3 you will do the carry. आप क्या करोगे, 2 को कैरी करोगे. नाउ नेक्स्ट write these tens in the tens place at the top and the 2 units under the line at the unit place. Now multiply the 1 in the tens place by 4. So 1 4 the 4, right. Now you will add this carried digit. अब क्या करोगे आप, 4 में ये carried digit add करोगे. So 4 + 3 7. So you will write here 7. Okay, अब क्या करोगे, यहाँ पे 7 लिखोगे. So the product is 7 to 72. Okay, now मल्टीप्लाई क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है 1 5 15 को किससे, 5 से. ओके, सो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई 5 यूनिट्स बाय 5. ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 यूनिट्स को 5 से, 5 यूनिट्स को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, 5 5s are 5 5s are 25. Okay, so here you will write here 5 and 2 you will carry. आप क्या कर दोगे, 2 कैरी कर दोगे, 25 का 2 कैरी करोगे. Okay, now 5 1s are 5. 5 + 2 7. So your final answer is what, 7 5 75. Okay, means your product will be 75. Okay, next question. 24 multiply by 3. So first you will multiply 4 units by 3. आप पहले 4 units को multiply करोगे 3 से. Okay, now 4 3s are 12. Okay, so now 12 is a 2-digit number. अब आप 12 में से सबसे पहले यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखोगे. ओके, और ये जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है 1, उसको क्या कर दोगे आप, कैरी कर दोगे. ओके, नाउ लुक हियर, 2 + 1. First you will multiply 2 by 3, right. 2 3s are 6. 2 3s are 6 plus 1 7. So now your product is 72. Okay, next question. Next question. इधर तो इसकी मिडल में ही आपको स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. Okay, now look, third one. 27 multiply by 3. 27 को 3 से multiply करना है. Okay, now you will multiply 7 units by 3. 7 3s are 21. 7 3s are 21. So here you will write 1 and you will do carry. 2 क्या करोगे आप, कैरी करोगे. Okay, next 3 2s are 6. 6 + 2 8. So now your product is 81. 81 81.
Okay, next 15. You have to multiply 15 by 6. So first you will multiply 5 units by 6. Now 5 6 are 30. So now you will write 0 and 3 you will carry. Okay, 3 क्या कर दोगे आप? Carry कर दोगे. Okay, then 6 ones are 6 and then उसमें आप क्या करोगे? ये जो 3 आपने कैरी कर दिए वो ऐड कर दोगे. 6 plus 3 9. So now your product is 90. Okay, so your product is 90. Okay, now okay, now look, next one. Tai says, now look at this carefully. We have to multiply 23 by 7. First we multiply 3 units by 7. 7 threes are 21. Now you can see here 23 को 7 से multiply करना है तो पहले 3 units को आप क्या करोगे? 7 से multiply करोगे. Okay, so now 3 sevens are 21. So you will write here 1 and 2 you will do carry. आप क्या कर दोगे? 2 carry कर दोगे. Okay, so now of these 21 units we make 2 tens and write them at the top in the tens place. Okay, now 1 is left in the unit place, right? Now 7 twos are 14. अब क्या करोगे आप? 7 को 2 से multiply करोगे. 7 twos are 14. Okay, then 14 में आप क्या करोगे? ये जो 2 remaining है वो क्या कर दोगे? Add कर दोगे. So now that will become 16 tens. Okay, so now look, we cannot write 16 tens here. So here 16 tens means 106 tens. So 6 tens you will write and 100. Okay, so it means your final answer is 161. Okay, means your product is 3-digit number. Okay, so now let's multiply these given questions. 36 multiply by 4. Okay, now look, 36 को 4 से multiply करना है. Okay, so 6 fours are okay. Now look, 36 multiply by 4. 6 fours are 24, right? So you will write here 4 and then 2 carry, right? So now 4 threes are 12. 12 plus 2 14. 12 plus 2 14. Okay, so now you will write here 14 tens means 104 tens. Okay, so 144 is your product. Okay, now let's do the next question. रीजा यहाँ पे राइट करना है. राइट हियर. Next, we have to multiply 40 by 8. Okay, so now look, first you will multiply 0 units by 8. So 0 8s are 0, so you will write here 0. Then 4 8s are 32, right? 32 tens. 32 tens means what? 302 tens. Okay, so your final answer is 320. Okay, final answer is 320. Okay, next. Now look here, next question. You have to multiply 54 by 7. So first you will multiply 4 tens by 7.
So 4 sevens are 28. So you will write 8 here and 2 carry. Now 5 sevens are 35. 35 plus 2, 7. 37. So 37 tens means what? 307 tens. 307 tens. So final answer is 378. हाथ नहीं लगाना है Last. दोस्तों, हाथ नहीं लगाना है जरा, हाथ नीचे, कीप योर हैंड डाउन। कैन आई ड्रिंक वाटर? टच नहीं करना, डोंट टच योर इयरिंग्स। ठीक है, सब लोग लगाए हो प्रोटेक्शन। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। Okay, now look here. You have to multiply. Now we'll multiply 92 by 8. Okay. Now look. First we'll multiply 2 tens by 2 units by 8. Okay. So 8 twos are 16, right? So you will write here 6 and 1 carry. 9. Then you will multiply 9 by 8. Okay. So 9 eights are 72. Okay. 72 plus 1, 73. Okay. So final answer is 736. Okay. So here we have completed. Next topic. Next topic is word problems. Okay. Now look here, how many chocolates in jars? Till now we have studied the numbers. Okay. Numbers पे ऐसे हम लोग को operations perform करने थे वो देखें. So now we will solve the word problems. Means आपको जो question होगा वो words में given होगा, आपको solve करना होगा, words में answer लिखना होगा. Okay. So now look. How many chocolates in 9 jars if there are 34 chocolates in 1 jar? Means 9 jars में कितने चॉकलेट होंगे? अगर एक जार में 34 है, ओके, 1 जार में कितनी चॉकलेट्स है? 34. तो 9 जार में कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. ओके. मीन्स 34 को क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई. ओके. सो नाउ लुक, 4 यूनिट्स को पहले आप क्या करोगे? 4 यूनिट्स को 9 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके. सो नाउ 4 9s are 4 9s are 36. Okay. So now 6 you write here and then 3 you will carry. Okay. Now 3 9s are 27. 27 plus 3, 30. Okay. So now here you will write 30 tens means 300. Okay. So 306 is final answer. So therefore number of chocolates is 306. Okay. So now look, next question that we have to solve. 1 meter of cloth costs rupees 95. Means 1 meter cloth का price कितना है? 95. Okay. How much will 6 meter of cloth cost? Means 6 meter of cloth कितना cost करेगा? Okay. So now look what we will do. We will multiply. Okay. So now 95 multiply by 6. Okay. So now 5 6 are 30. So you will write 0 and 3 carry. Okay. And then 9 6 are 9 6 are 54. Right. 54 plus 3, 57.
577. So cost of cloth is 576. Okay, got it? Understood properly? Next question. Now look here. Look here. Okay, if one book cost 85 rupees, means एक बुक का कॉस्ट कितना है 85 रुपीज. व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 सच बुक्स, मतलब टोटल कॉस्ट कितना होगा वैसी 5 बुक्स का. ओके, so now what you will do, you will multiply 85 by 5. okay, so now first we will multiply 5 units by 5. okay, 5 5 are 25. so 25 में से first you will write here 5 and then 2 you will carry. okay, then you will multiply 8 by 5. so 8 5s are 40. 42. okay, so 42 tens means what? 412 units. 12 to tens. okay, so 425 is your final answer. okay, so total cost is 425. okay, next question, last one. 1 liter of milk cost 40 rupees. How much will 3 liters of milk cost? अब देखो 1 liter milk का cost कितना है 40 rupees. okay, तो 3 liters milk का cost कितना होगा? so what you will do, you will multiply 40 by 3. so now look here, 3 zeros are 0 and 4 threes are 12. so here you will write 12. so cost of milk is what? 120 rupees. okay, got it? Now we have to solve the given questions. Solve the following problems. First one, 25 children in a row. How many? 7 rows. We will do in the same manner. Okay. अब क्या बोला है? एक रो में 25 चिल्ड्रन है, तो ऐसी टोटल 7 रोज है. तो आप क्या करोगे? फाइंड आउट करना है अगर आपको कि कितने चिल्ड्रन है, तो आप क्या करोगे? 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे. So now look, 7 5s are 35. 5 you will write here, 3 carry. 7 2s are 14. 14 plus 3 70. okay, so your final answer is 175. okay, next question. How much will 6 towels cost at 53 rupees a towel? okay, now look, 53 rupees है, एक टॉवेल का कॉस्ट 53 rupees है, तो 6 टॉवेल्स का कॉस्ट कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 53 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, नाउ 6 3s are 18. so 8 you will write 1 carry. 5 6 are 30. 30 plus 1 31. okay, so now your final answer is 318. means 6 towel will cost 318 rupees. okay, now look, 72 apples in a box. एक बॉक्स में कितने एप्पल है? 72. ओके, एक बॉक्स में कितने हैं? 72 एप्पल्स है. तो हाउ मेनी इन 5 बॉक्स, मीन्स आपको फिर फाइंड करना रहेगा कि 5 बॉक्सेस में कितने हैं. सो यू विल मल्टीप्लाई 72 by 5. नाउ लुक, 5 2s are 10. okay, so you will write here 0 1 carry. 7 5s are 35. 35 plus 1 36. okay, so your final answer is 360. okay, now look, one box holds 40 laddus. क्या बोला हुआ है कि एक बॉक्स में कितने लड्डूज है? 40. ओके, हाउ मेनी लड्डूज 9 boxes hold? so you will multiply 40 by 9. okay, so 9 zeros are 0 and 9 4s are 36. so your final answer is 360. okay, means 360 laddus do 9 boxes hold. okay, so here we have completed. Make your own problems of multiplication and solve them. so now look, यहाँ पे आपको information given है, उसके थ्रू word problem form किया हुआ है. देखो 8 rupees for one book, so 45 books means if one book cost 8 rupees, how much do 45 will cost? okay, so उसको accordingly solve किया हुआ है. अब देखो एक हम लोग को यहाँ पे given है, information है कि 48 pomegranates है in one box. 7 boxes में कितने होंगे, हम लोग प्रॉब्लम फॉर्म किया हुआ है. देखो, इफ देयर आर 48 पोमोग्रेनेट्स इन वन बॉक्स, हाउ मेनी आर देयर इन 7 बॉक्सेस? तो क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर? 48 मल्टीप्लाई बाय 7. 8 7s are 56. You write 6 and 5 carry. 7 4s are
28. 28 plus 5. 33. Right? So 33 tens means what? 303 units. Right? So final answer is 336. Okay? Means 336 pomegranates in 7 boxes. Okay? So here we have completed multiplication chapter.